Dear students, welcome to all of you on Grow Strong. Today we will explore the facts about the entitled theme, Principle of Organization of Guidance Services. As we know that the principle of organization of guidance services are based on the understanding that the guidance services should be structured to meet the needs of individuals seeking guidance. The key principles of organization of guidance services are as under. Number 1, principle of accessibility. Dear students, principle of accessibility simply means guidance services should be reachable or provided to every learner. Whether the learner comes from the town area or village area, کہ کوئی بھی لرنر چاہے وہ شہر سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ لرنر گاؤں کا ہے, ہر ایک لرنر کو گائیڈنس سروسز پرووائڈ ہونی چاہیے, یا لرنر بلانگس ٹو دا فار فلنگ اور ریموٹ ایریاز. جیسے کہ بہت سے لرنر جو ہے وہ دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا فار فلنگ ایریاز سے تعلق رہتے ہیں. آئی مین ٹو سے یو گجر اینڈ بکروال, اور وی کین سے دیٹ ٹرائبل اسٹوڈنٹس. ہر ایک لرنر کو گائیڈنس سروسز کی ایکسیس ہونی چاہیے. اپارٹ فرام اٹ, the accessibility of guidance services, dear students, also means that it should not be time restricted. کہ یہ ٹائم ریسٹرکٹڈ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ گائیڈنس سروسز کا جو نیچر ہونا چاہیے, it should be very much flexible. Flexible in sense, round the clock. جب بھی لرنر کے پاس ٹائم ہوگا, جب بھی لرنر کو گائیڈنس سروس کی ضرورت پڑتی ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس وقت اسے گائیڈنس ملنی چاہیے. Now let me quote my own example. It is not anyway related to the guidance services, but in order to understand the concept that it should be not time restricted. میں نے پہلے ایک فٹنس کلب جوائن کیا, لیکن وہ فٹنس کلب جو تھا وہ ٹائم باؤنڈ تھا. مجھے پرٹیکولر ٹائم پہ وہاں پر جانا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے میرا جو ورک کلچر ہوتا تھا وہ ہیمپر ہو جاتا تھا. دین آفٹر آئی سرچڈ another fitness club, and that fitness club was not anyway time bound. Otherwise جو پہلا فٹنس کلب تھا that was organized, ایوری فیسلٹی وہاں پر اویلیبل تھی, کوچ بھی اچھا تھا, اور جہاں پر کہ میشنری سسٹم جو تھا وہ بھی پرفیکٹ تھا, ہائیلی اکوپڈ, آرگنائزڈ تھا. لیکن ون آف دا بگیسٹ پرابلم وچ آئی واز فیسنگ دیئر دیٹ واز ٹائم ریسٹرکٹیڈ. دیٹ از وائی دا گائیڈنس سروسز پرووائڈیڈ ٹو اینی لرنر, by and large it should be not time bound. یعنی کہ گائیڈنس سروسز اس پیریڈ سے لے کے اس پیریڈ تک دی جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی پروویژن نہیں ہے. It means that it will create the problem. The learner will not get the ample opportunity to get guidance. So that is why accessibility of guidance services means it should be flexible, not restricted in terms of time. Number 2, principle of confidentiality. Dear students, second important principle of organization of guidance services is known as principle of confidentiality. It means information should not share with anyone. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں
जो क्लाइंट है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करता है गाइडेंस वर्कर के साथ, और जो इंफॉर्मेशन शेयर हो गई है गाइडेंस वर्कर को वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए. Sometimes nature of information is very much sensitive, like client has shared the information related to the familial conflicts, related to the conflicts between the parents. तो ये इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है. अगर गाइडेंस वर्कर ने ये इंफॉर्मेशन किसी और इंडिविजुअल के साथ शेयर की, it will create number of problems for the client. या कभी कभार सिचुएशन ऐसी है लर्नर फेस कर रहा है एकेडमिक प्रॉब्लम, यानी कि लर्नर इज फेसिंग द एकेडमिक प्रॉब्लम एंड कॉज ऑफ द एकेडमिक प्रॉब्लम इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स, और पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन अब जो लर्नर हैं वो गाइडेंस वर्कर के साथ शेयर करता है. उस इंफॉर्मेशन को राज की सूरत में रहना चाहिए. अगर वो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के रिलेटेड शेयर की एक क्लाइंट ने, तो उसी इंफॉर्मेशन को लीक आई मीन टू से यू गाइडेंस वर्कर ने की, उसकी वजह से कि जो क्लाइंट है उसे और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. और समटाइम्स दैट कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड गर्ल, वो इंफॉर्मेशन भी गाइडेंस वर्कर को मिल जाती है. आई मीन टू से इन टोटो द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग guidance services is that it is based on the principle of confidentiality. It means that कि privacy should be maintained. Number 3, principle of competence. Dear students, third important principle of organizing guidance services is principle of competence. It means the guidance worker must be skillful. The guidance worker must be knowledgeable. The guidance worker जो है उसके पास स्किल कंपिटेंसी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. Without the skillfulness or without having the knowledge or competency, guidance services cannot be provided to the client or learners who seeking the guidance. The learners are facing different types of problems or issues, and how to deal with those problems. The guidance worker must be knowledgeable, must be skillful, must be competent. Number 4, principle of diversity and inclusivity. Dear students, another important principle is that is entitled as principle of diversity and inclusivity. This means guidance services must be meant for all. यानी कि गाइडेंस सर्विसेज जो है ये हर एक को मिलनी चाहिए, हर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए होनी चाहिए. दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, रूरल वर्सेस अर्बन, मेल वर्सेस फीमेल, नॉर्मल वर्सेस डिसेबल्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए जो गाइडेंस सर्विसेज है वो सिर्फ उन लर्नर्स को मिल जाएगी जो शहरों में रहने वाले हैं या टाउन एरियाज में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं. नो, गाइडेंस सर्विसेज बिलीव्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. इट मीन्स इट शुड मेंट फॉर ऑल. चाहे बच्चा शहर से बिलोंग करता है, चाहे बच्चा गांव से आता है, चाहे लर्नर मेल है या लर्नर फीमेल है, या लर्नर नॉर्मल है या लर्नर
handicapped, I mean to say you disabled है. It should be meant for all. With number 5th, principle of client-centeredness. Dear students, another important principle of guidance is that it should be based on the principle of client-centeredness. The focus of guidance must be the needs and requirements of the client. यानी कि जो गाइडेंस है उसका मेन फोकस होना चाहिए what are the various needs and requirements of the client, what are the various problems and issues faced by the client. क्योंकि गाइडेंस सर्विसेज का बुनियादी मकसद होता है to focus the client, to focus the client's needs and requirements and how to fulfill the needs and requirements of the client. Number 6th, principle of collaboration. Dear students, principle of collaboration simply means school teachers, career counselors, healthcare providers, social service agencies, they should cooperatively work each other. They should collaboratively work each other. यानी उन्हें get together manner में काम करना चाहिए. Because there is a famous proverb that union is strength. यानी कि इत्तेफाक में ताकत होता है. Effective guidance is not possible without the collaboration, without the cooperation. Number 7th, ethical standard. Dear students, guidance services must be based on the principle of ethical standard. It means to maintain transparency, accountability, confidentiality और informed consent. ये सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, चाहे ट्रांसपेरेंसी है, चाहे अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट है, चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी है, चाहे इन्फॉर्म्ड कंसेंट है. बिकॉज द गाइडेंस वर्कर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द इंडिविजुअल और द क्लाइंट. क्लाइंट की एक्सप्लॉइटेशन किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए. अगर एक गाइडेंस वर्कर ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट्स के लिए क्लाइंट को एक्सप्लॉइट किया, चाहे मॉनिटरी बेनिफिट्स से, चाहे किसी और सेल्फिश मोटिव या डिजायर से, सो इट मीन्स वी आर वायलेटिंग द इथिकल स्टैंडर्ड. Ethical standard simply means to maintain the transparency, to maintain the accountability, to maintain the confidentiality और informed consent. Informed consent means कि हम forcefully किसी को guidance के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमें client की consent होनी चाहिए. वो रियली इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता है कि नहीं, और उस इंफॉर्मेशन को हम यानी कि लीगल वजूहतों के बगैर कि किसी और शख्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं. या हमारा अप्रोच जो होना चाहिए ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये विदाउट द बायस होना चाहिए. इट शुड बी विदाउट द सेल्फिश इंटरेस्ट. दिस वाज ऑल अबाउट द today's lecture. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel.